Fielder at square leg is also moving outside 30-yard circle. Almost getting an inside edge onto his stumps. There you see it was a flighted delivery. Getting an inside edge, the ball hit his back leg. Could have shattered the stumps. Living dangerously, the new batsman. This time again the ball coming back in. It was a wrong gun. Slight appeal from the bowler. No response from the umpire. That's what I was mentioning. Imran Chawla can bowl those googlies and wrong guns and surprise the batsman. We didn't see big turn in the first innings from MASHAL Plastic Tigers bowlers. But as we know, as the match proceeds, the pitch gets drier and the cracks open up. Can he extract that spin? Imran Chawla. This time pulled away and he has found the gap. This will be the boundary. Yes, it is. Good shot this from the batsman, Mubashir Anwar. It was balled at length and he was waiting on the back foot. Pulled that one away and found the gap between the long on and deep mid wicket. First boundary coming up from the bat of Mubashir Anwar. So that will release the pressure on him a bit. He was beaten on previous two deliveries. So runs remaining reduced now to 48 now. Still 7 wickets in hand. This time bowling it wide. Smashed it on the offside. Will the fielder at cover point cover that one off? No, another misfield, another boundary. Consecutive boundaries to the batsman now. Imran Chawla ending his over with 2 boundaries. Something that the fielding side didn't want at all. This time again bowling that one wide and short. The batsman smashed it. Found the gap. Past the cover and extra cover fielder. And not a good effort that from the fielder in the deep on the offside. After 8 overs, MASHAL Plastic Tigers are 59 for 3. इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुंच में है। इसकी साइट विजिट करें जहां तरक्कियाती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमायाकारी जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मज़ीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहां सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहां की फ़िज़ा में ताज़गी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहां आप और आपके बच्चे। There has been another change in the bowling attack. Shayan Mateen is now bowling from the opposite end. Captain Saqib Ikhlas is trying all his options. He wants wickets, and only wickets can win them the match now. This time getting outside edge. Single completed. I really think that should not have been a single. The fielder at short third man position needs to be sharp and alert. They are still giving away too many easy singles. Shayan Mateen calling the deep extra cover fielder inside the circle now. The fielder at point position is outside the 30-yard circle. As I speak, the fielder as point has moved squarer now. This time dabbing it down, finding the gap between the point and short third man. Another boundary. So flurry of boundaries we have seen in last few overs from MASHAL Plastic Tigers batsman. Shayan Mateen bowling it wide and he was waiting on the back foot, dabbed it down, finding the gap between the short third man and the point fielder. Score moves along to 64 for 3. Mubashir Anwar is also looking pretty settled now. This time driven. Couldn't find the gap. They just need 39 runs, MASHAL Plastic Tigers.
Still anybody game this if they can pick up wickets. NJS Chargers, they will have to believe in themselves if they have to come back into this contest. Otherwise, if they're going to give away those easy singles and boundaries, the game will be over in few overs. This time almost getting an outside edge, looking for that extra cover drive, the batsman missing it altogether. Last ball coming up from Shayan Mateen. This time played on the offside. No run taken. Dot ball to end the over. 9 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 64 for 3. Brilliant. कम कीमत, आला मेयार, SD और SBCA से मंजूर शुदा सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची कह रहा है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमहर सिटी कराची की साइट पर और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। Another change in the bowling attack from the Masjid end. Khurram Dilawar has been introduced. Another spinner. Looks like the Mashal Plastic Tigers team are going to break the jinx and going to chase the target easily, something that we haven't seen in this tournament. Chasing has been pretty difficult. This time again going for that big shot down the ground. The fielders are getting underneath that one and the fielder completes the catch at long off. Crucial wicket this for NJS Chargers. It was the first delivery of the new over. Did he need to play that shot? Noman Bari, he was looking so good. Flighted that delivery, the bowler. He went for that big shot in the air. He thought he might have timed it beautifully, but the long off fielder took it easily down his throat. So 4th wicket down. And Mashal Plastic Tigers are now 64 for 4. The batsman dismissed. Noman Bari for 30. और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची। Khurram Dilawar picking up that important wicket of Noman Bari of the very first delivery of his spell. Noman Bari was looking to continue his aggression, was looking to hit down the ground the maximum. Didn't time it that well. Fielder at long off took a nice catch. This time getting an inside edge. Will that run away for the boundary behind the wicket keeper? The fielder is giving up the chase. The fielder gathered the ball. 3 runs taken. Almost lost another wicket. Mashal Plastic Tigers on that occasion. The batsman trying to pull that shot, getting an inside edge. Went in between the legs of the wicket keeper. Again, Khurram Dilawar adjusting his field. This game is still not over, folks. The required run rate is not an issue. It's the wickets that count.
Saqib Ikhlas, the captain, still thinks that he can damage the batting side with his spinning options. That's why he has brought Imran Chawla as the first slip fielder. So there's a fielder at slip for the new batsman, Afan Imran. Went for that big shot outside the off stump, missing it altogether. There you see, it was short, it was slow. Big gap between the bat and ball on that occasion. This time again, trying to guide it down to third man. I think it's a very risky shot, especially when you can see that there is a fielder at the first slip position. Continuing their pressure, Khurram Dilawa. This time again, slow loopy delivery. Played it down to long on, just a single. Last ball coming up of this successful over from Khurram Dilawa. He picked up that important wicket of Noman Bari. This time cut that one away. Saqib Ikhlas threw it at the wrong end. He should have thrown at the bowler's end. There was an easy chance of a run out. The batsman smashed it. It went straight to the fielder, Saqib Ikhlas, and the rush of adrenaline. He should have threw it at the bowler's end. 10 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 69 for 4. Let's look at the batting card. Abdul Basit was bowled by Faizan Chaudhary for just 1 run. Saifullah Naseem went out LBW to Moiz Sultan of the Duck. Munibur Rahman scored 15 runs. Noman Bari was looking exceptional, but he was dismissed in the last over by Khurram Dilawa, trying to play that big shot. On the bowling point of view, Moin Sultan picked up the wicket in his very first over. So did Faiz Chaudhary. Huzaifa Rizwan has been wicketless so far in his 2 overs, conceding 14 runs. Imran Chawla also picking up a wicket. And Khurram Dilawa picked up the wicket in his last over. Shayan Mateen so far has been wicketless in his just 1 over. Shayan Mateen is going to continue with his second over. This time playing it down to long on. Easy single. And they are going back for the second run. Poor piece of fielding this by the fielder at long on. The fielder needs to be charged up. They need to stop those singles. But the batsmen are converting these singles into twos. This time again, smashed it between the gap at mid wicket and long on. Will they go back for another double? Direct hit. The batsman was well inside the crease. 3 runs of the first 2 deliveries from Shayan Mateen's overs. They just require 31 runs to win. Mashal Plastic Tigers. Another wicket can change the course of this match. And this is exactly what NJS Chargers will be looking for. Can Shayan Mateen deliver? This time again going for that big heave on the onside. Will they complete those 2 runs? No, the fielder at deep square leg managed to cut that one off and reduce it just to single. So there is still some sort of pressure on the batting side. This time going for that flashy drive outside the off stump. Couldn't connect. 30 runs to win now. Again playing towards mid-wicket fielder. There is a run-out chance at the bowler's end. And in fact, the run-out has been done. Good piece of fielding by the fielder at mid-wicket position. The batsman thought it was an easy single. He played towards the mid-wicket fielder.
The batsman at the other end ran too far. And it was a nice underarm throw from the fielder at mid-wicket. So 5 wickets down to MASHAL Plastic Tigers. Interesting competition this is turning out to be tonight. Can we have another tie? It's another cliffhanger. MASHAL Plastic Tigers have now lost their 5th wicket. And their score is just 73. एक ऐसा रियायत पुरसुकून और महफूज हों, तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़े एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है। वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, जहां पर पार्क्स, प्लेग्राउंड्स, एडवेंचर थीम पार्क, जू, डे एंड नाइट जंगल सफारी। इसके अलावा स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, कम्युनिटी सेंटर्स, कमर्शियल एवेन्यूज, कैफेज, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, सिनेमा, सुपरमार्केट्स, शॉपिंग मॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी। लग्जरी हाई एंड अपार्टमेंट्स, प्रीमियम विलास, स्टेट ऑफ द आर्ट्स हिल रिजॉर्ट्स और फार्म हाउसेस जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मॉडर्न आर्किटेक्चर पर। गुलमोहर सिटी मुतारिफ करवा रहा है कराची में पहली बार। So 5 wicket down MASHAL Plastic Tigers. Shayan Mateen. Good over this from Shayan Mateen. 11 overs have been bowled. MASHAL Plastic Tigers are 73 for 5. हिल गोल्फ क्लब, हॉर्स राइडिंग क्लब, वाटर पार्क, लेक और बहुत कुछ, ये सब एमिनिटीज़ इस प्रोजेक्ट को बहुत मुनफरिद बनाती हैं। सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से मंजूर शुदा एक काबिल एतमाद प्रोजेक्ट, जिसका लेआउट प्लान और डिज़ाइन बनाया है माहिर आर्किटेक्ट्स ने। वेल प्लान इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ पर बिजली, पानी और सीवरेज का एक खुदकार निज़ाम मौजूद है। और सबसे मज़े की बात, इतनी ज़्यादा सहूलियात होने के बावजूद इसकी कीमत एक आम आदमी की पहुँच में है। इसकी साइट विजिट करें जहाँ तरक्याती काम तेज़ी से जारी है। तो फिर देर ना कीजिए, आज ही अपने प्लॉट की बुकिंग करवाइए। एक ऐसी महफूज सरमाया का Khurram Dilawar is having a chat with his captain, adjusting the field. Continuing from the masjid end. Anas Mustafiz is the new batsman in after that run out in the previous over. They are picking up wickets at regular intervals, NJS Chargers. This time played towards the onside. The deep square leg fielder will cut that one off. Just a single. One more wicket. And NJS Chargers will start believing themselves back again. This time tried to play it on the offside. Couldn't time it. It was a direct throw in the previous over. The underarm throw that caused that run out. Mubashir Anwar so far has scored 19 runs of 17 deliveries. This time almost getting an inside edge onto the stumps. Again, there has been no fielder at short fine leg. The fielder at short third man had to run all the way to gather that ball. These are the small things that the captain needs to consider when they are not playing the fielding positions. Where to have your fielders, your quick fielders, their positions. First slip comes in now. Played it on the offside, and this is going to be another boundary. Top shot is by Mubashir Anwar. Khurram Dilawar flighting it that one, looking for an outside edge. But Mubashir Anwar was up to the task. Smashed it past the fielder at long off, and there was absolutely no chance for the fielder there. Just 23 more runs required now. This time again flighting it wide. This time playing it down all along the ground towards long off. Smart batting this by Mubashir Anwar. He knew he has scored a boundary. There was no need to take an unnecessary risk. All he did was pick up a single, move at the other end. This time again smashing it on the offside. There is a field protection out there in the deep on the offside. Just going to be a single.
So after 12 overs, Mashal Plastic Tigers are 82 for 5, requiring just 21 more runs to win. ऐसी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकान में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेयर प्लान और आर्किटेक्चर वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SDO और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट में विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। Another change in the bowling attack from the opposite end. Daud Bari is into the attack now. With his leg spin. Flicked it on the onside. Just a single. The Mashal Plastic Tigers are now making it easy. They just require 20 more runs in almost 8 overs left. Again, almost getting over the head of the mid-wicket fielder. Just a single. He tried playing that aerial shot. Luckily, getting it over the head of the fielder at the 30-yard circle. Mubashir Anwar. Just 19 more to win. Anas Mustafi is now on strike. Big appeal. No signal from the umpire. We'll have to see whether the ball hit the bat or the pad. Pitching on leg stump and clearly getting an outside edge. The batsman was looking to turn the ball away on the onside, getting a leading edge. Luckily no damage done. This time going for that sleep. Big appeal and umpire raises his finger. 6 wicket down for Mashal Tigers. Good piece of bowling this from the bowler. He knew the batsman didn't read his previous delivery. So this time he bowled it within the line of the stumps. And it was a pretty straightforward decision in the end from the umpire. The batsman completely missing that. The ball hit his pads. Easy decision now. 6 wicket down, Mashal Plastic Tigers. And they still require 19 more runs to win. जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमहर सिटी कराची की साइड पर। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफ़सीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस। So even Daud Bari picking up a wicket in his very first over. 6 wicket down, Mashal Plastic Tigers. Can NJS Chargers bring themselves back into this contest? Just 19 runs to win. This time going for that big shot. The fielder was sitting deep on the onside. Just another single. Last ball of the over coming up. Mubashir Anwar is on strike. He is on 27. He has played calmly in this inning so far. He will be looking to finish off things for his team and guide them through to the victory.
10 boundaries have been scored so far, just 2 maximum, both coming off the bat from Numan Bari. All the fielders are shouting, trying to make sure that the field is positioned nicely. This time getting a leading edge. Luckily, the batsman got his bat down at the last moment. Otherwise, that would have crashed onto the middle and off stump. 13 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 85 for 6, requiring and just 18 more runs to win. जो वादा है आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का। मजीद मालूमात के लिए वेबसाइट विजिट कीजिए। जब हम बात करते हैं घर की, तो घर कैसा होना चाहिए? जहाँ सुकून हो, इत्मीनान हो, खूबसूरत ज़िंदगी और हसीन नज़ारे हों, हरियाली हो, दरख्त हो, जहाँ की फ़िज़ा में ताजगी का एहसास हो। ऐसी बेहतरीन और सेहतमंद ज़िंदगी हो जहाँ आप और आपके बच्चे पुरसुकून और महफूज हों। तो एक ऐसे ही घर की ताबीर है गुलमोहर सिटी, एक ऐसा तामीराती मंसूबा जिससे जुड़ा है कराची शहर का मुस्तकबिल। कराची M9 ख्वाब है। Khurram Dilawar is going to continue with his leg spin. Mashal Plastic Tigers still require 18 runs. But the match is still not over. Just 4 more wickets required by the NJS Chargers. Good move by the fielding captain Saqib Ikhlas, bringing the slip in for the new batsman. We haven't seen Saqib Ikhlas bowling tonight. Nicely defended on the offside. Will that be a run out? No. Slight misfield. The fielder couldn't pick the ball right on right time. 86 for 6. 17 more runs to win. The run rate required is not an issue. It's just a matter of wickets. Change in the field for the right-handed batsman. Will this be another nail biter? Can this go down to the wire as well, like we saw last night? This time smashed it on the offside. Just a single though. The contest between Sumia Gladiators and Birch Builder Hawks ended in a tie last night here at the same venue. Mashal Plastic Tigers required 16 more runs now. Ali Tahir is on strike. Khurram Dilawar bowling his third over. This time played it in the air. Will that be taken? What a catch that is by the fielder. Imran Chawla is pumped up. 7 wickets down, Mashal Plastic Tigers. There was absolutely no need to play that shot. Khurram Dilawar proving out to be the golden arm. He tried to play that over the head of the extra cover fielder, but Imran Chawla, what a piece of fielding that is. Surely they are back into this competition now, NJS Chargers. What a contest we are having. What a match we are witnessing. Mashal Plastic Tigers are 87 for 7. क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चर मोटरवे की प्राइम लोकेशन। Khurram Dilawar picking up this second wicket in his third over. Just 3 more wickets away, NJS Chargers. Can they pull off a miracle? Can they win it tonight and keep their hopes alive for the finals? Mubashir Anwar is on strike. Nicely played it wide to the long on fielder. Just a single. It's good for the bowling side that the new batsman is now on strike. What a catch that was from Imran Chawla. He batted beautifully in previous innings.
guided the sinking ship, and now he has taken a wonderful catch as well. This time bowling it short. No run. Mustafa Musa, the hero of the first innings, picking up 6 wickets, breaking the backbone of the NJS Chargers batting lineup. Last ball coming up. This time guiding it down to third man. No run taken. So 14 overs have been bowled. MASHAL Plastic Tigers are 88 for 7, requiring just 15 more runs. ब्रिलियंट, कम कीमत, आला म्यार, SDO SBCA से मंजूर शुदा सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहम्मद सिटी कराची ये कह रहा है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। Daud Bari is going to continue. What can he do? Can he also pick up a wicket? Can he add those extra pressure on the batting side? 15 more runs to win by MASHAL Plastic Tigers. This time played down the ground to the long on fielder. They're still not out of the competition yet, MASHAL Plastic Tigers. Mustafa Musa is the new batsman on strike. The batsman at the non-striking end going to have a word with the new batsman. All he needs to do is to stay calm. The required run rate is not an issue, so even a few dot balls won't harm them, the batting side. That is exactly what Mubashir Anwar must be explaining to Mustafa Musa. This time nicely played it on the onside. No fielder on the fine leg position. The keeper had to run all the way to gather that ball. Mubashir Anwar is now back on strike. He has paced his innings beautifully. He has taken those calculated risks. 30 of 25 so far. Good delivery. That ball pitched outside leg stump and bounced a bit more than he expected, hitting his chin. Will there be a slight delay now? No, the batsman signaled that he's okay now. Just 13 more runs to go. 3 wickets required by NJS Chargers. Mubashir Anwar. Again, playing it down the ground. Sensible batting this by Mubashir Anwar. Mustafa Musa now is on strike. Just 1 run so far in his 3 deliveries that he has faced. Daud Bari. Nicely defended. That is exactly what the batting side needs right now. No extra risk. No fancy shots. No need to play shots in the air. Let Mubashir Anwar do all the batting. This time clipped on the onside. There is no fielder deep on the onside. 2 runs completely done. So 15 overs have been bowled. MASHAL Plastic Tigers are 93 for 7, require just 10 more runs to win. Let's look at the batting scorecard. Abdul Basit only scoring 1 run, getting bowled by Faiz Chaudhary. Saifullah Naseem going for that dug from Moeez Sultan. Munibur Rahman could only manage 15 runs. Noman Bari was looking dangerous, scored 30 of 26. Mubashir Anwar is still out there at the crease, 31 of 27. Afan Imran scoring just 2 runs. Anas Mustafi is also
scoring just 3. Ali Tahir, the last man, dismissed for just 2 runs. The bowling display, Moiz Sultan picking up just 1 wicket in his 2 overs. So did Faiz Chaudhary. Huzaifar Rizwan went wicketless. Imran Chawla picking up 1 wicket in his 2 overs. Shayan Mateen went wicketless in his 2 overs, gave away 9 runs. Khurram Dilawar picking up 2 wickets in his 3 overs. And Daud Bari also very economical, getting 8 runs and just picking up 1 wicket. So 10 more runs to go. NJS Chargers are still making some adjustments in the field. They still think they can stretch it down to the last wicket. Khurram Dilawar is going to bowl out his spell. Play towards the offside. Saqib Ikhlas at extra cover position. Collected that one off. This time, play down the ground, wide of the fielder at long on. Will they go back for the second run? No. Mubashir Anwar playing sensibly here. He knows they don't require boundaries right now. Just singles will do. Just 9 more runs to go. Still plenty of deliveries left. This time going for that big shot, Mustafa Musa. And it's taken in the deep at square leg. Did he need to play that shot? Mubashir Anwar was talking all the way that they just required those singles. But Mustafa Musa was the hero with the ball. But he won't be the hero with the bat for his team. There you go again. It was a flighted delivery, enticing that big shot. And the fielder at deep square leg completed that catch. Has that dismissal brought NJS Chargers back into this competition? Mashal Plastic Tigers are 8 down now for 94. Require another 9 more runs. और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए, आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है Khurram Dilawar picking up his 3rd wicket of the last ball. 2 nights, 2 nail-biting finishes. What a tournament we are having. This Gulmohar City Presents Youth Friendship League. This time again, almost chopping it on to his stumps. This time the ball went straight, getting an inside edge, and almost the batsman tracked that ball back into his stumps. Could have been 9 down, Mashal Plastic Tigers. NJS Chargers still believe they are into this competition. Just 2 golden deliveries. This time pulled that one away. There is a protection out there in the deep. It will just be a single. Good field placement this from the captain Saqib Ikhlas. New batsman in Ali Mustafiz. What a spell this is from Khurram Dilawar. Eight more runs required. 2 more wickets left. Who will get on top at the end of this game? Remember, this is a crucial match for NJS Chargers. They have only managed to win 1 game in their previous 3 matches. Last ball of the over coming up. Khurram Dilawar again flighting it wide outside the off stump, and it's a single. That should have been stopped.
So 16 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers are 96 for 8. पर वाक़ई एक रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, एक गेटेड कम्युनिटी जो हर तरह से महफूज है, वेल प्लान रोड नेटवर्क, 24 घंटे सिक्योरिटी और सर्वेलेंस, Seven more runs required. 4 overs left. The required run rate is just 1.75 runs per over, but it's the wicket column that's a sign of worry for the batsman. Just 2 more wickets left. Daud Bari is going to continue. Khurram Dilawar has bowled out his magnificent spell of spin bowling. He picked up 3 wickets for 20 runs and turned the match in favour of his side. But the job is not complete yet. 2 wickets still required by the fielding side. Mashal Plastic Tigers must have been thinking this will be an easy chase when Noman Bari was going all berserk with his boundaries and big shots. But since his wickets, they have lost wickets at regular intervals. Most of the wickets falling to the spinners. Batsmen attempting those big shots, couldn't timing it. Ali Mustafiz is now on strike. Daud Bari adjusting his field. Fielder is deep at deep square leg. Anas Tariq is on the field now. It is short fine leg. The fielder at point. Fielder at short third man. It is deep extra cover. This time playing it down the ground. In fact, they can go for the second run as well because it's very wide of the fielder at long off. 2 runs easily completed. Crucial 2 runs these. There you go. Flighted that delivery. He played the cover drive. Found the gap between the extra cover and the long off. Should have been a good throw from the fielder at long off. These small moments can change that match on their head. 7 more required. 2 wickets to go. Again, hitting about in the air. Landing safely in front of the fielder. Had that been taken, Mashal Plastic Tigers would have absolutely been living with themselves. 4 runs required now. Right-hander is on strike now. Mubashir Anwar. He has guided this chase along very nicely, very smoothly indeed. Is there another twist in the tail? Can he pick up another wicket? Daud Bari. The batsman wasn't ready. Dead ball signal by the umpire. Again, there is no fielder at short fine leg. Third man is inside the circle. The cover fielder is outside the circle. This time playing it straight to the bowler. Dot ball won't hurt. Mubashir Anwar can afford to take his time. This time it was a flighted delivery. Went for that big shot. Luckily for the batsman that he didn't get an outside edge. Living dangerously. Just 4 runs to go. Why would you go for that shot? The fielder at mid-wicket is very close to the non-striker's end. There you go, another single. So 100 comes up for Mashal Plastic Tigers there. 100 for 8, require another 3 runs. Last ball of the over left from Daud Bari.
Just 3 more runs. Ali Mustafiz is on strike, the left-hander. Another change in the field. Anas Tariq at deep square leg. The extra cover fielder is also deep at the boundary. This time bowling it wide, the ball turned back in. Almost got an inside edge. 17 overs have been bowled. Mashal Plastic Tigers just required 3 more runs to win. गुल मोहर सिटी कराची एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकान में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पे वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SD और SBC से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते। Just 3 more runs required by Mashal Plastic Tigers. Shayan Mateen is back into the attack. The fielding side skipper trying all his tricks, using all his bowling options to make sure that he can pick up those last 2 wickets. Will he be successful? Shayan Mateen bowling the 18th over of this game. Mubashir Anwar is on strike. So far he has batted beautifully. He has anchored this innings and make sure that he stays there till the end. Three more runs to win, Mashal Plastic Tigers. And that has bowled him! What a wonderful delivery that is! That pitch outside the off stump, the batsman went for that drive and there was a big gap between the bat and pad. And the ball just cannonballed to his off stump. Big wicket this from NJS Chargers. What a twist this is. 9 wickets down, Mashal Plastic Tigers now. With just last wicket to go, still required 3 more runs. Another nail biter this tonight. अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल मोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम वक्त मौजूद हैं। तो आइए। What a contest. What a nail-biting finish this is turning out to be between Mashal Plastic Tigers and NJS Chargers. As we have been mentioning it before, chasing has not been easy in this tournament so far. So even a modest total can create troubles for the chasing side. And as we have seen tonight, Mashal Plastic Tigers are now 9 wickets down, still required 3 more runs. He has gone for that big shot. Has he found the gap? Will the fielder cut that one off? Yes. 2 runs taken. And the scores are level. Important 2 runs those from the bat of Noman Chawla. Just 1 more run required now. Shayan Mateen is calling his fielders inside the circle now. Can he pick up his second wicket and the final wicket for Mashal Tigers? Or will Noman Chawla be the hero with the bat? What a finish this is. What a tournament this is turning out to be. Both teams giving it their 100% effort.
Important delivery this. He bowled it fast, he bowled it wide. It was very close to the wide line. Almost all the fielders are inside the 30-yard circle now, protecting the single. And this time he has played that straight. Slight fumble. Thankfully no run taken. Still 3 balls left in this over. Can Shayan Mateen provide the breakthrough? This time again flighted it, played it on the offside, no run taken. Pressure being maintained on the 2 batsmen out there. Just 1 more run required by MASHAL Plastic Tigers. On the other hand, NJS Chargers just need to pick 1 last wicket. This time getting it outside edge, and those are the winning runs coming off the bat from Numan Chawla. This will go down to the boundary at the 3rd man position. And MASHAL Plastic Tigers have won this game by just 1 wicket. He bowled it wide, went for that big shot. The fielder diving away to his right. Couldn't get ahead on that occasion. And MASHAL Plastic Tigers have successfully chased down this modest target of 103. What a contest this was. Going down to the last wicket. Let's look at the batting scorecard. Abdul Basit dismissed by Faiz Chaudhary. Saifullah Naseem was the first man to go. LBW dismissed by Mozi Sultan. Munibur Rahman scoring 15 runs. Noman Bari looked dangerous for his 30, but even he was dismissed. Mubashir Anwar stayed till the end until he was castled by Khurram Dilawa. Affan Imran scoring 2. Anas Mustafiz also just scoring 3 runs. Mozi Sultan picking up 1 wicket. Faiz Chaudhary also picking up 1 wicket. Imran Chawla giving away 16 runs in his 2 overs, picking up a wicket. Shayan Mateen also picking up a wicket in his last over. Khurram Dilawar was the pick of the bowler, picking up 3 wickets in the end. And Daud Bari giving away 12 runs in his 3 overs. So the match summary: NJS Chargers, after winning the toss, were just bowled out for 102. Mustafa Musa, what a new spell he bowled with the new ball, picking up 6 wickets for just 16 runs. Imran Chawla was the top scorer for NJS Chargers for 24. In reply, MASHAL Plastic Tigers were moving along nicely towards the middle of the innings, but the regular wickets made it into a nail-biting contest. They in the end won by just 1 wicket. Mubashir Anwar being the top scorer for 34. Khurram Dilawar on the other hand picking up 3 wickets for 20. आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुल मोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मकान में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SDO SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुल मोहर सिटी कराची ये कहना है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुल मोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला
इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम अब वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SDO और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची कह रहा है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है, जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की ज़मानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइट ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला इस प्रोजेक्ट की तमाम डिटेल्स आपके साथ शेयर करने के लिए हम अब वक्त मौजूद हैं। तो आइए आप भी अपने प्लॉट की बुकिंग करवाएं और अदायगी 5 साल की आसान माहाना किस्तों में अपने घर के ख्वाब को अब हकीकत बनाएं। मज़ीद तफसीलात आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.gulmohargroup.com.pk। महंगाई के इस दौर में अपना घर बनाना बस एक ख्वाब है। क्या ये ख्वाब हकीकत हो सकता है? जी हाँ, इस ख्वाब को हकीकत का रंग दे रहा है गुलमोहर सिटी कराची, एक ऐसा रिहायशी प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहा है सेहतमंद माहौल के लिए, एक ग्रीन सिटी के कॉन्सेप्ट पर, जहां आप और आपकी फैमिली एक पुरफजा मुकाम में जिंदगी गुजार सकते हैं। कराची हैदराबाद M9 मोटरवे की प्राइम लोकेशन पर वाक़ रोड फेसिंग प्रोजेक्ट, जो कि आपको मुहैया करता है जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मेयार जिंदगी। और हाँ, इसका लेआउट प्लान और आर्किटेक्चरल वर्क ब्रिलियंट, कम कीमत, आला मेयार, SDO और SBCA से मंजूर शुदा, सरमायाकारी का बेहतरीन मौका जो आपके बच्चों के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है। गुलमोहर सिटी कराची कह रहा है कि हम दावा नहीं करते, अपना प्लॉट बुक करने से पहले एक बार साइट जरूर विजिट करें। तो फिर चलते हैं साइट पर, आइए। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुलमोहर सिटी कराची की साइट पर, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तरक्याती काम बहुत तेज़ी से जारी है। Welcome to the presentation ceremony of this 9th game of Gulmohar City Presents Youth Friendship League, and what a contest it was between MASHAL Plastic Tigers and NJS Chargers. MASHAL Plastic Tigers eventually lost 1 wicket in the end. I would like to call upon first of all the losing captain, Mr. Saqib Ikhlas. Saqib Ikhlas is busy. We'll start off with the winning captain, Anas Mustafiz. अनस, काफ़ी करीबी मुकाबला रहा। हमने देखा कि टूर्नामेंट में चेजिंग बहुत मुश्किल सामने आ रही है, लेकिन आपकी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह पे चेस कर लिया। बहुत छोटा टारगेट था। क्या कहेंगे अपनी टीम की परफॉर्मेंस के बारे में?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह एक हमारे नाम हुई। टारगेट तो इतना बड़ा नहीं था और स्टार्ट किया था तो हम रिलैक्स भी थे कि टारगेट इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब मैच खेल रहे हैं तो यही नज़र आ रहा है कि जैसे 3 दिल्ली कम्युनिटी की टीम्स हैं, 3 मेमन की टीम्स हैं, तो सब अपने बेस्ट लेके आए हुए हैं। तो अगर हमने अगर सामने वाली टीम को जो है वो लो टोटल पे रोक लिया है तो हम कभी भी रिलैक्स नहीं हो सकते कि हम इजीली चेस कर जाएंगे। जाहिर सी बात है सामने वाली टीमें भी कम्युनिटी के बेस्ट। हर मैच जो है वो मेरे ख्याल से अब स्पेक्टेटर्स या जो भी व्यूअर्स हैं वो जहन बना लें कि हर मैच इसी तरीके से टफ मैचेस होंगे। बिल्कुल, हमने देखा कल भी बिल्कुल थ्रिलर ऑफ अ मैच रहा और टाई हो गया, और आज का मैच भी आखिरी विकेट पे आप लोगों ने जीता। मुस्तफ़ा मूसा के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो उनका नया बॉल का स्पेल था, कंसिस्टेंटली आउट स्विंग करते रहे और फिर हैट्रिक भी ली आज के मैच में उन्होंने? नहीं, माशाल्लाह डेफिनेटली जो वो एक यंगस्टर है और बहुत एनर्जेटिक है। जिस तरीके से वो मतलब जब 3 ओवर करा लिए थे, थोड़ा सा मौसम ऐसा था, काफ़ी जो है वो ह्यूमिडिटी फील हो रही थी ग्राउंड में, लेकिन वो इतना उस वक्त चार्ज था। उसने बोला नहीं मैं 4था ओवर भी कराऊंगा और मुझे अपनी तो वो नहीं है, मुझे टीम के लिए करा कि मैं इसमें जो है और विकेट्स निकाल सकता हूँ। तो हमने उसको और उसके मतलब उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट सपोर्ट और अल्हम्दुलिल्लाह उसने रिजल्ट्स दिए और माशाल्लाह उसका मैच चेंजिंग टीम के लिए बहुत बेहतर साबित हुआ। क्या माहौल था ड्रेसिंग रूम का जब आखिरी ओवर में मुबशिर अनवर आउट हुए खुर्रम उनकी बॉल पे और सिर्फ आखिरी विकेट रह गई थी और 3-4 रन फिर भी चाहिए थे? प्रेशर तो था बिल्कुल, लेकिन हमारी टीम हमें जो है अपने हर प्लेयर जो है वो नसीब कॉन्फिडेंट था कि मुझे उम्मीद थी कि ये नुमान जो है वो फिनिश कर देगा। उसने कॉन्फिडेंटली शॉट्स भी खेले, उस तरह नज़र भी आ रहा था कि इंशाल्लाह वो कवर कर लेगा। बाकी क्रिकेट है, कभी किसी टीम की जीत है, कभी किसी टीम की हार है। सामने वाली टीम ने भी बहुत अच्छी एफर्ट्स की माशाल्लाह, जिस तरीके से फील्डिंग की और फिर उनके बॉलर्स खुर्रम दिलावर, दाऊद बाड़ी, मतलब एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि हम इजीली मैच स्कोर जो है वो चेस कर जाएंगे, लेकिन जिस तरह उनके अच्छे बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, जगह पे बॉलिंग की और फील्डर जिस तरीके से इमरान चावला ने कैच पकड़ा वो आउटस्टैंडिंग था। तो इसी तरीके से होता है, जब आप अच्छी फील्डिंग करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं तो मैच में कभी भी कमबैक कर जाते हैं और उन्होंने करा, इसलिए उनकी भी टीम को दाद देनी होगी और इंशाल्लाह ताला इसी तरीके के मैचेस नज़र आते रहेंगे। चले अनस, 2 मैच जीत चुके हैं इस टूर्नामेंट में, उम्मीद रखेंगे कि ऐसी ही फॉर्म बरकरार रखें आखिरी टूर्नामेंट में। बेस्ट ऑफ लक फॉर द रिमेनिंग टूर्नामेंट। द लूजिंग कैप्टन नाउ साकिब इखलास, इफ यू कैन कम फॉरवर्ड। साकिब भाई, एक और अच्छा मैच देखने को मिला है, इस बार आखिरी विकेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। हाँ बिल्कुल, मतलब सब लड़कों ने बहुत अच्छा खेला, मतलब क्रेडिट इन सबको जाता है। जिस तरह से उन्होंने फील्डिंग करी है, जिस तरह से बॉलिंग करी है, जिस तरह एनर्जी टीम की थी माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी और मतलब इतने कम स्कोर पे, और जैसे कि माशाल्लाह ने जितना रोका था, जितना अच्छा खेला था, उसके इतने कम स्कोर पे फिर इतनी एनर्जी देना वो काबिल तारीफ है इंशाल्लाह सब। जब सिर्फ 102 रन आपने बनाए थे तो आपको लग रहा था कि आप डिफेंड करने में कामयाब हो जाएंगे, क्योंकि अब तक हम फेस किया है चेजिंग टीम्स ने इस टूर्नामेंट में? और जो भी हो, हम उतरे थे उसको रोकने के लिए 102 के टारगेट को, और जो अल्हम्दुलिल्लाह लड़कों ने बहुत मेहनत की है। केडी ने बॉलिंग की, आज इमरान चावला ने, फैज़ ने माशाल्लाह से जितनी एनर्जी डाली है, तो हम रोकने ही आए थे इसको इंशाल्लाह, और बहुत अच्छी एफर्ट की सबने। चलें साकिब, एक मैच रहता है अभी टूर्नामेंट का, उम्मीद करेंगे कि विनिंग नोट पे ख़त्म करें। बिल्कुल इंशाल्लाह, बिल्कुल कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द लास्ट मैच। नाउ द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी। The first award is for the best bowler of the match, and it's a gift hamper from Me Body Spray and free meal voucher from Biryani Wala, and it's none other than Mustafa Musa for his brilliant 6-wicket haul. Musa also picking up a hat-trick along with that 5-wicket haul. Next award is for the best batsman of the match, and it's a ₹1,000 cash voucher from Debonair Salon, and it goes to Mubashir Anwar. Now the award for the cool player of the match, a gift hamper by Medicam and free meal voucher by Penny Pizza, and it goes to Khurram Dilawar.
And now the big award of the night, the man of the match award. It's a gift hamper by Admiral, a suit by Al Zuhaib, and 2,000 rupees from Gul Mohar for the fantastic piece of ball. Again. Mustafa, if you can have few. नई बॉल आपने बहुत अच्छा स्विंग किया, राइट हैंडर को आप बॉल थे और लेफ्ट हैंडर के आपने हमने देखा कि वो जो लेग स्टंप आपने गिल्ली उड़ाई और हैट्रिक भी की। तो जो हैट्रिक बॉल था उस वक्त क्या दिमाग में ख्याल आ रहा था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस यही सोचा था कि लाइन लेंथ में बॉल करूंगा, जो कि कैप्टन ने कहा था कि बस विकेट टू विकेट बॉल करते रहें, इंशाल्लाह विकेट खुद ही देंगे वो लोग। बस इसी पे अमल किया और विकेट मिलती रही। मुस्तफ़ा, उम्मीद थी आपको कि 4 ओवर एक साथ ही कराएंगे क्योंकि 2 विकेट्स आ गई थी? अक्सर ऐसा होता है कि जो आपके स्ट्राइक बॉलर होते हैं वो लेटर ऑन दी इनिंग्स इंट्रोड्यूस करते हैं कैप्टन, लेकिन क्योंकि आपकी फॉर्म चल रही थी तो इतना स्टेमिना लग रहा था कि आप कैरी ऑन कर सकेंगे। नहीं, बिल्कुल। जब बॉल स्विंग हो रही थी तो जो कैप्टन है उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने बताया कि भाई आपका बॉल स्विंग हो रहा है, आप लाइन लेंथ पे काम करें, आप इसी लाइन पे करते रहें, इंशाल्लाह विकेटें आती रहेंगी। और ऐसे ही हुआ, ओवर करता रहा, लाइन टू लाइन करता रहा और विकेटें अल्हम्दुलिल्लाह आ गई। चलिए मुस्तफ़ा मूसा, बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, इंशाल्लाह ताला अगले मैचेस में भी ऐसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। थैंक यू। That's it from the presentation ceremony. We will be back in the next match. It's me signing off. Allah Hafiz. जो इस प्रोजेक्ट की कामयाबी की जमानत है। और हाँ, आप चाहें तो साइड ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। यहाँ मौजूद प्रोफेशनल अमला